Okay. So welcome. This is going to be a basic session. I hope people who had asked me, requested me for a basic session are here because uh, they wanted to know about which tools to focus on and all that. So many webinars have been done on that. But still, and there are a few other things also I need to convey. So we'll be going through that. Now, see, as most of the webinars that we have done recently, we are more or less repeating the same. So I don't know what different I should tell. If anybody has any suggestions, any tools they want me to focus on, I can do that. But to begin with, for those who are new, those who have started using iCharts new, for them, what I would suggest is to focus on premium decay is one tool over here. This is one tool which is very important. It tells you, it gives you a very good idea of the direction of the market. So you can form based on what is happening over here. You can observe it for a few days, and then you'll be able to form rules based on which you can. Can anybody, if you're not talking to me, kindly mute, please. Bye. So we don't disturb everyone. So thank you. So if you want to, watch this tool for some time, you will be able to form rules based on which you can determine market direction. You can even take trades based on this. So you just need to observe this for a while. We can discuss few guidelines. I've already discussed this many times, but we can go through this again. And this is a very good tool. So that's the reason why I'm telling you, first thing, this is the tool to watch. Always keep it on. The second one, which is very important, is OI stats beta. This is another tool. This, if you click on 30 and click on intraday and auto update range, it'll keep updating and it'll tell you which side. This part is important. This is the OI change chart. Total OI change for the selected strikes. Whatever strikes you have selected over here near ATM is going to be near ATM 7 strikes over here. So for these strikes, what is the total OI change in the last 30 minutes? Most recent 30 minutes, telling you from here, last 30 minutes is 3 to 3:30. It's telling you what is the OI change. So if you uncheck this auto update range, so during daytime, this is what it will do. So 30 minutes, whatever within these 30 minutes, what is happening, automatically it will keep updating once you have this selected. 1 minute, let me see if I can show you the new one. I'm just testing it right now. So I don't know if I have that link. Let me just see if I can get that link. Just give me a minute. And I'm not getting that link. I'll get that link later. What we have done is, see, this question was there that how to, if you need to test, back test, do a back test and move this timeline by every 15 minutes or so. So we have done that and it's almost going to be released in the next couple of days. So that is ready already. So that using that, you can actually do a back test and see how this OI change is moving during the day. So I suggest using
30 minutes, 15 minutes or 30 minutes, 15 minutes may be fast, too fast sometimes. So 30 minutes, and this will tell you which side the open interest sentiment is. Basically, that is the side where a lot of OI is being positioned. That day over here, it tells you that the call side OI is more. So call side OI more means it is bearish, and this is only the sentiment. You need to reconfirm with price to actually make sure that the market is going down. So, but this will give you an idea of the sentiment, where the positions are being, how the positions are being uh, created in the market, which side, whether call side or put side. And if it's call side, then it is bearish. If it's put side is more, it is bullish. So this is what this tool will tell you. So once you click on this 30 minutes and then auto update range, this will automatically keep updating and showing, it will show you the latest 30 minutes of this data. So this again, along with this premium decay, this tool is again very important. These two together will give you a very good idea of the trend that is going on. And it's again, whether you're an option buyer or an option seller, the most important thing is the direction of the market. Because time decay, of course, if you're an option seller, time decay is there on your side. But then if you also have market direction on your side, then that is a double edge for you. So it is very important. So having both market direction and time decay on your side is important. And for option buyers, the direction is very, very important, because you need to know which side. You need to be on the right side of the market, and you need to be on the right at the right time. So we'll see how to do that a little bit later. But this direction you need to form first. So this will, both these tools, this is based on prices. So, and this is based on OI sentiment. So both these are important. This will tell you which side the OI positioning is happening, and this will tell you which side the price is moving. These lines are telling you the change of call and put prices. The green line is call price, put line is put price of all these strikes together, whatever you have selected. And so what is the change of total prices of these options, call and put, from market open? So this is the change of these. With some, we do some adjustment for IVs and all that to keep this smoother, because option prices can fluctuate significantly, and sometimes they don't trade in a minute or so. It's not a problem for Bank Nifty, but for illiquid scripts, we do those IV adjustments to make sure that the chart is smooth. So it's just price change basically plus some adjustment. So this is what this shows you. So price and OI based. So these two things will help you in identifying the direction of the market. So these are the two key tools. Then Total PE-CE OI beta is there. Sir, can I interrupt for a second, please? Sure. So this OI stats that you showed, which is the ideal time frame to watch out for? Has been for intraday. 30 minutes is decent. 30 minutes is good, actually. So it shows the trend, whether it's changing over the last 30 minutes, like which side it is headed, right? Yeah, it basically shows you the change of open interest. So it shows you the sentiment. So where the positions are positioned. I mean, the positions, where are they picking up? So whether it's on the call side or put side. So it shows you that. Sir, so and it's the not candles exactly on the the right. trend, but in general, which side the traders are taking trades, basically. Yes, sir. So, and the candles on the right, if you look at the bottom, there's some small little white over the red candle. Yeah. So that is the unwinding, right? Unwinding, yes. Yes. All right, sir. So basically, unwinding is people moving out of that option and choosing other things. Sorry, I didn't. So in simple terms, what is unwinding, sir? Unwinding is generally what happens. Unwinding is closing of positions. When positions get closed, open interest will decrease. So open interest had increased till here, and then it is coming down. It means, in general, what will happen is, if you see big unwinding, small unwinding, maybe nothing. I mean, it may be ordinary. I mean, nothing, just positions closing. But whenever there is a big move in the market, you'll see unwinding on that side. If the market is going down, then you will see put side unwinding, because whoever have written puts,
whoever have sold puts, their positions are getting into risk. So they are getting into loss. So what they do is they either shift positions down or they close positions entirely. So in both these cases, open interest will decrease. So that is what is happening is what is we call as unwinding. So if market is going up, then call positions are at risk and you'll see call unwinding happening. If market is going down, put unwinding will be there. So, but if it is significant, then only then it means there is some action being taken by traders and their positions are at risk. But if it's, I mean, this small, then it may not mean much, basically. But you'll see unwinding in total OI change on this chart on the left. So that is important. You will see, let us see, wait over here. Let me take this out and we'll see where unwinding is there. So visible here. Okay, it's not there over here. I wanted to give you an example, but you'll see this, I mean, a large magnitude. If market really moves, then you'll Yes, see sir. that significantly unwinding will be there. And then even this dark shade will be at the bottom over here. So this means huge unwinding has taken place. So when market really moves, that is when it will tend to happen. So last 30 minutes, it's not happening, so you can't see much. Sure, sir. So you can monitor it during the market hours, and then you'll be able to see how exactly it looks. I will do that, sir. Sir, and the above, there are two rows of data, right? Like the upper one and the lower one. Yeah. The lower one is the current change, and the upper one is for the longer duration, right? It is not a change. This is the net actual open interest in the market right now, actual positions in the market right now. This is Mm-hmm. the change since previous day data. Since previous day. Previous day. Sure, sir. Yeah. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much. Welcome. Okay, so the other tool that is important is Total PE-CE OI change, and the one we suggest you use is the one under beta. So this, again, the idea here is one is clear. I mean, this will tell you the direction most of the time. Sometimes it may be misleading, but most of the time, this is going to give you a correct indication of which side the trend is. So if kindly mute yourself, everybody, so there'll be no disturbance. Thanks. Kindly mute, please. Or better you mute it from. Yeah, I'm muting it for all. Yeah. Kindly unmute only if you want to ask any question, and then immediately once you have asked, just mute, please. Yeah, we will raise the hand and we will ask. Yeah, sure. Here, and the one is to identify this trend. This is important. This is the diff of PE-CE OI change. So P open interest P open interest change minus C open interest change. So this is the net open interest change between calls and puts. Put minus calls actually. So if it is bullish, put OI change is more, then this will be green over here, and it means it is bullish. Market is bullish. Now, this gives you a quick indication of direction. And then after that, if you are using all strikes, ideally for direction, you got to use all strikes. And now here it says it started with being bullish and then it got bearish. And once you have the trend has taken hold, you need to watch for large unwinding. These negative numbers are unwinding, and around 1% or more are significant as far as all strikes are concerned. For near ATM strikes, then you need to figure out, because you need to observe and see what unwinding is significant. I mean, 1% may not be significant, maybe 3%, 5%. You may have to use a larger number for unwinding. But for all strikes, 1%, around 1%, close to 1% is significant. And this tells you that
put side, call side unwinding has happened here, but it may not continue because this is not yet 1%. So, but it's close to 1%. So you can assume that maybe the market will go up, but no, over here it has gone down. So this failed. So this is just an indication of unwinding. Now, whether market continues to the upside, because unwinding on the call side means market could go up because people are perceiving risk on the upside. That is why they have closed call side positions. But it may not move. You need price also to move, but price has not moved up from here. It has actually gone down. So this indication has failed. So this was just probably a profit booking or something. I don't know. Or maybe they just wanted to close positions and not take much risk. So it's that kind of a move. So you can monitor these CEOI change and PEOI change, and these are the time interval based OI changes. So whatever time interval that you have selected here, 3 minutes, these unwindings and buildups are for those 3 minutes between this and this. Between these 3 minutes, what has happened? This is telling you that. And when you see unwinding on the put side, it is bearish, generally bearish, and on the a large unwinding on the call side is bullish. But price has to confirm. This is only sentiment. Open in anything related to open interest is just sentiment. It's just positions. These are just change of positions. How many positions on the call side are changing? How many on the put side are changing? So based on that, we can say that, okay, it could be bearish or bullish. But once price confirms, then you know that, yeah, it's really probably going to go on that side because both has to confirm your analysis on which side it is and the price confirming the same side. And that gives you a confirmation. So this is another good tool. Hello. Yeah. Can you give a total P minus CE OI difference graph for 5 days? 5 days, it can be Now done. you are but at giving the only moment, 1 we are day not- graph. If you take a positional trading, if it is a 5 days graph, it will be more useful from expiry to expiry. Okay. Yeah, at the moment, we don't have a plan. You can, what you can do is, I mean, it's not available as a chart, but over here in day-wise price and wise summary, you can take a look. This tells you this total PE-OI change. Okay, but you want for 5 days. So yeah, that will still not be possible. Yeah, as of now, I mean, we do not have a Or plan at to least add 2 days, that, but at least 2 days. no, at the moment it is not there basically. So Okay. it is not even there. So I can't give you anyway. So, but I'll think about it. I'll think about it. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Then. Yeah. So yeah, this is another tool that I said it was important. These two are again note this premium change and Y stacks. These are again important. Now let me see. There are many other tools that give you more or less the same. I mean, what you saw in Total PE-CE OI change, we have another Cumulative OI change tool where you can again for the same OI change since morning. This also will give you the same all strikes, or you can go for near ATM. And this is again in a chart format. It's again giving you the same information, how total OI change in calls and total OI change in puts. So Can it whichever be is taken? Excuse me. Can it be taken for 2 days, sir, for this option? no, that is Cumulative what OI this is. change? All this is only 1 day because this is for the day. It always starts from 0. Basically. Okay. So, I mean, we will have to give it in your case. You can, but at the moment it is not there. I think it is as an individual strike. It is there for cumulative. For many, it is not there. See, in this 5 days is there. Yes. Same option. Yeah, but this is for selected strikes, but it's not combined. 5 strikes together, it is we not want is what my requirement is. This should be combined. Yeah, fine. We'll plan to add it in this tool. So that will probably
make At it least useful. Because PCR this is also is combined. combined. It is not a combined PCR, is it not? This is combined. Combined PCR Cumulative OI change is combined. for all strikes. Yeah, whatever strike. This is all strikes means this is all strikes. Open interest change. This is individual. This is individual. Okay. This multi-strike OI change. Here PCR option is there one. PCR also is there here. PCR also you can. That PCR calculates for all strikes, is it not? Yeah, this is It all has strikes then, based. then it has become a 5 days difference is you have to add one more tab. Yeah. We will try and add it in this OI change. Okay. It will be useful. We'll try and do that. Okay, thank you. At the moment, we are not working on anything, but I'll note this down. So we'll try and give it for 5 days. Yeah, so this is another tool that what we saw in Total PE-CE OI, it gives you the same information, but not much information. This just gives you the OI change difference. So just if you need to track the PCR, which side it is going, or the difference between call and put OI changes. So this, if the market is trending, I mean, this will give you a clear indication that once the call OI change line is above the put OI change line, it means that lots of calls are being shorted. So call selling is going on, and so that means it's bearish. So this will give you a clear indication. And this the difference of these two lines is this yellow line. So this being below this zero line is itself indication that the sentiment in the market is negative or bearish. So this will give you that. This is a quick, but not much information is there. Not as much information as Total PE-CE OI. But if you just want to track this, the difference between call and put OI changes, then you can just select this, and you have other options of selecting only a couple of strikes or near ATM strikes with fixed center strikes, or near ATM with floating dynamic ATM strikes. So all these options are there. You can take a look. This is also a quick snapshot tool to look at the quick snapshot of the market. What is this Any combined questions OI, you sir? have? Otherwise, please mute. Please What is mute. this combined OI, sir? Tab? 1 minute. Let me. I don't know who is. Yeah, who had the question? Yeah, who had the question? Kindly unmute and let me know, please. Sir, in this tab, there is a one column, combined OI. What is this one, sir? How it is Yeah, used? it is for, see, over here, the OI change currently is being taken for only this expiry. Okay. Right. When you select combined OI, it will take for all expiries. Okay. All these expiries, all expiries available, basically. Whatever is That available, means it will that take. month expiries are all total 3 months. All expiries, all available expiries, it will take when you click Okay. combined OI. Okay, let me just a couple of questions are there. So we have strategy based on OI builder. Is it possible to get API link? We currently don't have any APIs built, so we cannot provide API for this. So we'll think about it later. As of now, I think another person has asked Espresso or ICI Direct will be available live data in the future. We can take a look. We are looking at many brokers. We are adding Fires next, Alice Blue. So we'll take a look at others also. As many. If you what you can do is you can just give us a post it in our Telegram group feature requests. So we will note it down over there, and we'll try and get it. If we get lots of requests, then we'll add that as. Dhan is also very popular nowadays. Yeah, sure. We'll note it and we'll try and do. Okay, another person is asking, these are questions in chat, so I'm just taking a look and quickly replying. Will the recording be? Yeah, recording is always uploaded to our YouTube channel. OI stats time frame 30 minutes is the best one.
Yeah, this I've already answered. Recording will be available. Yeah, that's fine. Okay, so we'll continue over here. Okay, before I go to another tool, let me quickly go to a tool that we are going to release very soon. Strategy Builder, we have been working on this new version for a while. There's still some few things pending over here, but it is ready for use, and many traders are testing this right now. So this is getting ready. So I mean, people This will be wanted, great, sir. This will be great. yeah. So many people wanted this selection using option chain, and so we have given all that, and you can even do this, have this, all these kinds of things are there, Greeks and all that. Whatever And features, hope when it is attached to Upstock, we can trade it directly from here. that is the idea. That is the idea. Definitely, yes. I mean, we'll be doing that. I mean, at the moment, the work is not done on that. But once this tool is ready, we'll be providing a way to send these orders directly. Definitely. In this one, we can do the back testing also, no, sir? No, that is the next step. See, once this is released, we'll immediately start work on simulator. Okay. I mean, not back testing itself. Back testing is different. Simulation is different. So Yeah. simulation, we are going to add to this. Okay. So you can set up a strategy, historical strategy last year or somewhere, and then step by step you can go until expiry and see what happens. So basically a simulator. So trade simulator, yeah, that will be added to this tool itself. It's a builder, in fact. We will start work on that. It's not a too big a task once this basic tool is ready. So we already planned how it is to be done. So once this tool is released, immediately work will start on that, and we'll make it available for testing in a couple of weeks after that, once we start work. So just wanted to show this. This is an excellent feature. This is what it was lagging here because Yeah, very we true. just Yes. have to change the application from iChart to another one. Yeah, So very if true. we have this live builder in the iChart only, it will be very easy for us to move forward during the day. Yeah, very true. So whoever wants access before we release, because there are people already testing, so you can send me a message, in Telegram, and I'll give you access to this. So please send me a message so you can test it out. So we have all these options here: automatic saving, hiding of closed legs, and columns. You can enable, disable here what you want to see, and you can view all your trades also over here. They'll be updating live, and you can just open the trade right from here itself. So whatever trade is there, so you can click analyze and open it, and you can also delete and all that. Srikanji, if I may interrupt, sorry. Yeah, yeah. Firstly, thank you for this wonderful eye charts. I've been Thanks. using since a couple of days and it's been excellent. Oh, thanks. Srikanji, I had a couple of questions. Yeah, one by one, please. Kindly, yeah, somebody is talking, so please wait everybody else. Srikanji, hello. Yeah, tell me. Yeah, so I had a few queries. Yeah. Firstly, do we have something like OI spurts available in iCharts? Because earlier I was using Opstra. So in Opstra, there are certain features like OI spurt. Okay. So what happens in that is if there is any unusual activity in the OI of any of the stocks, it will come on. Hello. Yeah, yeah. Yeah, can you tell me your name, please? I'll mute everyone else. Who's speaking? Weber. It will be by the name of V. V, right? I think one Mr. Harish Okay, is 1 minute, 1 minute. Now V is, let me unmute you 1 minute. Yeah, I've done it. I've done it. Okay, It's fine. yeah. Yeah. So there is this thing known as OI spurts. So what used to happen in that, right? If we click on OI spurts,
So it used to give us a sheet or a dashboard kind of a thing where any unusual activity in the OI of a stock option used to be visible at a glance. Like suppose there is a strong, let's say, long unwinding or short covering which happened. Okay, Okay, like which is abnormal. So it okay, used to show us like let's say more than 5%, 10%, or something very abnormal. So it used to give us that indication that this is happening. So we could check that in the stock, in the spot price and the chart, and then accordingly, initiate a trade. okay. At the moment, we don't have anything like that. Okay. You could, I mean, there is a way to view those. 1 minute. Let me 1 minute. Just a second. Because everything else is available. That is just Yeah. one thing which I found unavailable. So I thought I'll ask if that is there, and No. I'm unable to find it. No, the closest thing, I mean, you can get whatever is happening in the last 15, 30, 60 minutes over here, but you need to filter it Right. manually here. Okay. This is there, and for the day itself, you can view even in this also, volume and Y change spikes. But this is for the day. I mean, I think what you want is in what is happening, some unusual stuff that is happening in last 15 minutes or 30 minutes or Yes. whatever. Maybe. Yes. Yes. Yeah, so Yes. this will give you for the day, but this is where probably you can check. Also, so one more question. Yeah. Firstly, let's conclude the previous one. Is it possible for you to give us, something like that in future, where instead of one day we can also select the time frames, let's say 30 minutes, 15 minutes, Yeah, or something like that? yeah, I have noted that down. We have just not built it. So we might, Okay. yeah, we might consider because we got sidetracked into that broker login thing and all that. So Right, reacting right, data. right. So Because actually, see, as option buyers, we look for momentum, right? So yes, as yes, soon as true. we see some unusual activity, let's say there has been a unusual long unwinding, so we know that we can easily create a short position, and accordingly we'll get some decent momentum there. Yeah, yeah, got it. Yeah, we'll plan Secondly, for sir, something like that. Sure. Yeah, sure, sir. Thank you very much. yeah. Thanks. And one last question, sir. Can you go to the futures rollover section, please? Yeah. Yeah. Can you please type Nifty there? So we'll get all of the Nifty, Bank Nifty, right? Yeah. So now let's say that right now the rollover percentage it is showing as 7.5. Hmm. Yeah. So is it 7.5% rollover done today or total for the month? Yeah, this is only going to be for the last trading day because only one Okay. day has passed since expiry. So we're not No, even no. one. See, Yeah. this is for the last trading day, but I have a couple of screenshots of the previous month as well because I do monitor futures rollovers. Yeah. So it'll So be in that, from, yeah, it is from previous expiry to until now. So as of now, what is the rollover? That is what it tells you when you okay, look at so it. that will be the total rollovers. Yeah, total roll. Yes. And when is this updated? This will be because this is based on open interest, so it'll keep updating throughout the day, basically. Throughout the day. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Okay. Perfect, sir. Thank you very much. Okay. Well. Yeah. Yeah. So this is about the new tool that is getting ready. So this will be released pretty soon. Me. Okay, so anybody has any other questions on any other tools that you want me to discuss? There are many tools, so uh, if anybody wants a detailed explanation of any tool, I can go through that. So Hi, sir. yeah, Just I wanted to know, what all features we can use in iCharts if you want to take a position in stock options. stock options. Thanks. Yeah.
what I would say is, yeah, if when you are taking options, do you trade spreads or do you just buy options or sell options? For now, maybe like if you want to take a positional kind of thing, Okay. Okay. anything that you have in your mind that's good for us, again spread anything that you have in mind, which Yeah, you want we us have to know about. discussed. Yeah, we have discussed this before also. Day-wise price and Y summary is probably a very good tool to for No, so positionals. just I'll Here, add for that. Just I'll sorry. add one thing because the reason why I'm asking is from November onwards, the lot size and everything might change, right? So there could be some. I think the volume of the stock options that we could expect some more participant. That's what I feel because when the index options are getting also expensive just like stocks because Yeah. we have only monthly expiries for Bank Nifty and Yeah, sure. Yeah, so we have discussed this tool before also, and this is probably a very good tool for taking positional trades. So the idea would be to scan based on either 5-day buildup or based on this, even the days buildup, based on how long you want to take a position. If you're looking for bullish positions, then you look for long buildup. And then you can drill down over here, drill down into this, and then see what is happening in the last few days, basically. And then based on that, you can take up positions. And in this case, even the total PE-CE OI change over here, I think all columns are not here. PE-OI change. So this also will be useful. So what is happening? You scan here for whatever direction you're looking for. And if you think market is going down, then look for short buildup. So whichever is in short buildup. And then based on that, just drill down into that, whichever you are interested in, and see what is happening in the last few days. And if it's mostly same, it is mostly short buildup, and you're also looking at more, this is actually over here, it's showing actually a little bit bullish. But if you feel that based on this data that the market, it could go down, then you can take positions in that direction. This is one tool probably that will be very useful. There's a lot of data here based on which you can take positions. One is 5-day buildup. Then another is the combination of these, combination of CEOI change, PEOI change. This again, 1 minute. Let me over here also, I need to select the same column. I'll remove the Y columns. Yeah, so these three, you can even scan based on these total CEOI change, total PEOI change, and the difference basically. So based on these, you can probably shortlist over here. And then again, drill down and confirm your analysis based on what is happening in the last few days. And then based on that, you can take a position. So this is all this is again based on open interest. So if you still want, I think if you want to involve price also, you can go to scripts in uptrends, downtrends under futures. This tells you about the price-based trend. And if you are looking for, say, about a week's position or a 15 days position, use that and see whichever direction the market is going. Over here, generally, if this, since the bearish count is more, it is more for the 7-day trend. It is overall bearish. The market is overall bearish. So if you want to go for, you can filter based on price also. And if you find anything common between these and these, then you can probably, that would be a good idea, because
This is telling you which side the market is going in the last 7 days, the price trend actually. So which side it is. So this will give you a lot more confidence if OI based analysis also is telling you the same. But of course, price based would probably be a lot more when it's telling you that the price is going down right now over here. So this will probably carry more weight. But if OI analysis also can confirm the same, that will be really good. So here for intraday, we have to use 1 day, correct? Yeah, for intraday 1 day. Yes, yes. Okay. So I think these 2-3 tools, these two are interconnected. So basically, this day-wise and Scripson uptrend, downtrend are going to be 2 tools that you can use in conjunction and probably shortlist stocks for actual taking of positional trades. So here you can probably even either say maybe sell calls or maybe sell call spreads or any other structured position, limited risk position will be better actually. So you can do. So who had asked this question? Anything else you wanted? I think these two. हेलो सर Yeah. सर मैं बोल रहा था कि सर जो टूल्स है आपका मैं कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ हाँ. तो इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंस जो है उसका कुछ हिंदी में एक कुछ वीडियो वगैरह बनाई ना सर जिससे अच्छा बहुत से सारे समझ ऐसे सकूं पिछले पूरे बहुत टाइम के बाद इंग्लिश में वीडियो कर रहा हूँ. बहुत सारे पिछले वीडियो सब हिंदी में ही किए हैं मैंने. आप जाके लास्ट फ्यू वीडियोस देख लीजिए, वो पूरे वही है. ये और सेम पूरा कहाँ मिलेगा ये वीडियो कहाँ पर मिलेगा यूट्यूब में है हमारे यूट्यूब यूट्यूब में चैनल. यहाँ पे अच्छा यूट्यूब ऐसे चैनल में कीजिए, यहाँ पे हेल्प पे जाइए वीडियोस पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे जाएगा. अच्छा और वहाँ पे हमारा लेटेस्ट वीडियो जो भी है, ये आज का हाँ अब ये अपलोड होगा, वो छोड़ के पिछला 2-3 वीडियो आप देख लीजिए, पूरे हिंदी में ही है. और पूरे सारे ठीक है सेम और टूल समझाया मैंने. नहीं सेम वो टूल्स को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ठीक है बहुत अच्छा लगा आपका जो प्लेटफॉर्म है जी ये जी, ऑप्शन धन्यवाद. करने के लिए बहुत अच्छा मतलब बनाया आपने इसको थैंक यू और थैंक यू. थोड़ा कुछ कुछ चीज है जो समझ नहीं पा रहा हूँ तो नया नया है तो इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रहा है श्योर तो आप वो वीडियो इसका देख लीजिए. शायद फिर अगला वेबिनार जो होगा वो हिंदी में कर दूंगा. लेकिन हाँ वो सर एक एक सब हिंदी में सारा कीजिए ना समझाया तो है मैंने ठीक है उसमें भी हिंदी में. जी. तो सर इतना सारे टूल्स है तो मतलब जो जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करना है तो इसमें से इम्पोर्टेंस जो है किस चीज को मतलब देखना है और उसका क्या कनेक्शन है आपस में इसको थोड़ा हाँ, समझना वही है मैंने पहले जो बताया था ना कि जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स जो है आपको जो देखना है वो प्रीमियम डीके है. फिर ये, अच्छा हाँ हाँ, ये बीटा में वाई स्टैट्स है. तो ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट है डायरेक्शन के लिए. आपको इससे हो जाएगा. इससे जनरली अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप जाके पिछले वीडियो में देखिए, ऑप्शन नहीं स्नैपशॉट सर के बारे में बताया था. सेलिंग सेलिंग के लिए सर राइटिंग के लिए बोल रहा राइटिंग के लिए. अच्छा, और था राइटिंग हाँ के लिए फिर तो आप ये प्रीमियम डीके और वॉइस स्टैट्स बहुत हो गए. प्रीमियम डीके मेरे कई कुछ दोस्त हैं जो सिर्फ प्रीमियम डीके यूज करते हैं. प्रीमियम डीके जो जिस डायरेक्शन बताता है उस डायरेक्शन में हाँ ऑप्शन सेलिंग करते हैं, बस डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग. तो अब ये काफी हो जाएगा. ये टूल भी बस सिर्फ ये एक टूल काफी हो जाएगा. बहुत लोग हैं हाँ इसमें सिर्फ, तो बहुत क्लियरिटी बहुत अच्छा है ये क्लियरिटी एकदम क्लियर पिक्चर जो मतलब दिखा देता है कि क्या हाँ, होने वाला बस क्लियर हो जाता है इससे. बहुत लोग हैं वो जो इससे भी करते हैं, इससे भी ऑप्शन सेलिंग करते हैं. तो लेकिन वो थोड़ा इसमें एनालिसिस करना पड़ता है. ये तो क्लियर कट समझ में आ जाता है आपको. और प्राइस बेस्ड है तो इसमें थोड़ा ठीक भी रहता है क्योंकि जनरली प्राइस के नहीं साथ. तो ऐसे तो ट्रांजेक्शन भी थोड़ा देखना पड़ता है तो समझ हाँ, गया ना करेक्ट करेक्ट. But your premium Sir, DK मैं it does very good, sir. या श्योर. सर मैं एक टूल बताता हूँ भाई साहब को हाँ. Hello. जो विच आई फील वेरी हैंडी. गो टू दी मल्टी स्ट्राइक ओआई सर. ओके, 1 मिनट. मल्टी स्ट्राइक. And select near ATM strikes 5 strikes. ओके. 5 strikes. And for the day, या
if you can put Nifty, because last day was Nifty. So if you see, just remove the fair price and all these things, let only the strike. अच्छा, यहाँ देखिए भाई साहब को ग्रीन स्ट्राइक जो है, इफ यू पुट द कर्सर ऑन द ग्रीन स्ट्राइक सर, इट इज 24,300 CE. Yeah, जो स्ट्राइक सबसे ऊपर जा रही हो और आउटस्टैंडिंग उसमें ओआई बिल्डअप हो रहा हो, उसको सिंपली सेल कर दीजिए या आपको स्प्रेड बना दीजिए इसका, सिंपल. right. बहुत लोग करते हैं, करेक्ट है, बराबर है. और अगर आप बायर हैं तो सबसे नीचे वाला जो स्ट्राइक अनवाइंड कर रहा है उसको आप बाई कर लीजिए सर. आप नीचे Okay. देखिए पी को दिखा रहा है ये लोएस्ट, आप पी को बाई कर सकते हैं. ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है विच आई फॉलो एंड इट इज वेरी एक्यूरेट सर. Okay, great. See, एंड that's a very good idea. इसको भाई साहब को बताएं, ये ट्रेंड भी बताता है कि आज बियरिश है क्योंकि COI सबसे हाईएस्ट है. Right, और आपको ये स्ट्राइक सेलेक्ट करके आप सेल भी कर सकते हो. right, correct. सो दिस इज एन एक्सीलेंट एप्लीकेशन सर. Okay, great. मतलब देर इज नो कंपैरिजन इन इंडिया सर, बिलीव मी. I have seen Quantsap, I have OI Pulse, I have seen Opstra, everything sensible. You have the best thing, sir. Believe me. Great. सबके होते हैं सर, सबके यहाँ उनके उनके खुद के स्पेशल टूल्स होते हैं. हमारे यहाँ ये है, बस ऐसा है. नहीं, मल्टी स्ट्राइक सब में है सर, मल्टी स्ट्राइक Okay, एवरीवन है. right. बट देर आर फ्यू फीचर्स लाइक आपका P-C है या कंसोलिडेटेड आपका जो OI चेंज है और प्रीमियम डिके है. प्रीमियम डिके में सर ओनली वन थिंग इज लैकिंग. दिस इज नॉट अ रियल प्रीमियम डिके सर. दिस इज अ कंबाइन ऑफ प्रीमियम डिके एंड द प्राइस एक्शन मूवमेंट सर. Correct. That is true. I mean, this is basically only, this is basically 1 minute. वो कहाँ था वो प्रीमियम डीके? So in fact the word decay is हाँ, you it have should be named it premium change actually. I have yeah, thought it about is a this. premium Yes. change. It is not a decay. Yeah, we are In not fact, actually decay- showing you a decay. Decay, Yes. no one can follow it, sir. Yeah, it should actually be labeled as premium change actually. That is a Yeah, better. because decay कोई भी measure नहीं कर सकता सर. हाँ, बहुत correct, बराबर है, बहुत मुश्किल है. Decay कोई भी measure नहीं कर सकता. I have Yeah. tried calculating it since last 2 years. Decay को आप नहीं पकड़ सकते कि कितना decay होगा. Right, बराबर. It is invisible thing, sir. So this is a Wonderful. combination Thanks. of decay plus price action. Correct. But thanks for this idea. आप जो भी पूछ रहा था, मेरे ख्याल से उनके लिए एक अच्छा आइडिया है ये. ये मल्टी स्ट्राइक जी, OI जी, आप भाई जी, साहब करो, ये बहुत ही स्ट्रांग है सेलर के लिए भी और बायर के लिए भी. Great. बट ओनली थिंग इज जब आप ऑफ स्टॉक से या फायर से या धन से हम कनेक्ट कर लेंगे और ये ऑनलाइन हो जाएगा, जैसा कि कुछ और एप्लीकेशंस टिक बाय टिक देते हैं, सो इट विल बी मच यूजफुल सर. श्योर. वो ऐड होना है, अभी इस पे काम चल रहा है, लेकिन वो ऐड हो जाएगा अभी. हाँ, तो वो ऐड हो जाएगा तो हम लोग को और क्विकली इसको वी कैन गेट द आइडिया सर व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट, राइट, especially for the day traders sir. करेक्ट, वेरी ट्रू. यस. Okay, thanks a lot. Thank you. Thank you sir, thank you. थैंक यू सर. Thanks. Okay, so who had asked about that positional trading idea? I hope I have replied that, because these two are the most useful tools for positional, day-wise price and OI summary, and scripts in up and down. I think these two are yes, the most important. श्रीकांत सर, Yeah. yeah, yes, sir. वो And the one जस्ट मिनट, एक क्वेश्चन इसी से पहले था मेरा, जस्ट मिनट Sorry. सर. इसके पहले जो फ्यूचर्स में स्टॉक्स का लाए थे आप, बिल्डअप वाला दिखा रहे थे, वो कहाँ से लाए थे, एक बार दिखा. कौन सा वाला? वो OI इसमें scan. 5 डे बिल्डअप आ रहा था. अच्छा, वो तो डे वाइज था. ये वाला ना, 5 डे बिल्डअप. हाँ, इसमें कहाँ से आया था डे ये वाइज? फ्यूचर्स डे वाइज प्राइस एंड OI summary.
ओके ठीक है सर। और वो जो अपना जो नया वाला स्ट्रेटेजी बिल्डर है, उसमें मैं एक चीज थोड़ा ऐड करवाना चाह रहा था, हाँ उसको अगर ओपन हो तो बताए। हाँ, 1 मिनट। हम्म, वो मेनू पे अवेलेबल नहीं है तो। हाँ बोलिए सर। ये इसी के अंदर जब सब पोजीशंस ऐड हो जाती है हाँ नीचे की तरफ जब हम जाते हैं, तो यहाँ पर एक रीसेट प्राइस का ऑप्शन आ सकता है क्या? नहीं, समझा नहीं मैं, किसके लिए यहाँ सॉरी। पर, जहाँ पर थोड़ा सा आप इसको नीचे लाएं स्क्रॉल करके, जहाँ पर हमारे स्ट्राइक्स आ चुकी है, यहाँ पर ये आई भी क्या आई, यहाँ पर ही कोई, जैसे सब स्ट्राइक्स आ चुकी है, कुछ हमको मैन्युअली डालनी पड़ती है, कुछ क्या कभी कभार लेगिंग आ रहा है, मैं देख चला रहा हूँ ना, तो मुझे लेगिंग लग रहा है थोड़ा सा। आपका आवाज नहीं आ रहा है सर मुझे। आवाज कम आ रही है, आप ठीक है? हाँ आप ठीक है, हाँ फिर से बोलिए। तो यहाँ पर जो ये एक्शंस है, यहीं पर जस्ट ऊपर कहीं पर भी एक रीसेट प्राइजेस का ऑप्शन आ जाए, तो सबकी सब प्राइस रीसेट हो जाए। कौन से प्राइस रिसेट हो जाए? ये एंट्री जो प्राइस? हम ऐड करने वाले हैं, हाँ। अच्छा अच्छा, वो लेकिन वो तो मेरे ख्याल से आप जो ट्रेड एग्जीक्यूशन के टाइम में रहेगा हाँ, ना। एग्जीक्यूशन के टाइम का ही हाँ मैं बोल रहा हूँ। वो टाइम पे कर देंगे सर। अभी एट प्रेजेंट तो ये सिर्फ स्टडी बिल्डर है। हाँ जब एग्जीक्यूशन ऐड करेंगे वो टाइम पे करेंगे उसको। हाँ, मैं वही बोलना चाह रहा था कि यहाँ पर एक रीसेट प्राइस का ऑप्शन आ जाए। हाँ श्योर, ठीक है। बस वो मुझे लग रहा था, मैं मतलब मैं सेंसिबल और इसके अंदर एक देख रहा हूँ, मैं यूज भी कर रहा हूँ, मैं आपसे जुड़ा हुआ भी हूँ इसीलिए। राइट, तो बताया ठीक मैंने कहा कि अगर ये चीज हो जाती तो जैसे अभी चल रहा है काम, तो उसमें हो जाता सर वो। ठीक है ठीक है, जरूर जरूर ऐड कर देंगे उसको। वो तो रहेगा उसमें, वो सारे टूल्स रहेंगे। वो ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए आपको जो भी लगने वाला है वो फिर आपसे फीडबैक लेके हम लोग ऐड कर देंगे 1 बाय 1 पूरा। तो ठीक है वो सर। ये तो बेसिक है, वो तो डेफिनेटली रहेगा ही। हाँ, क्योंकि वो क्या अभी कभी कभार क्या होता है, हम लोग इधर से चूज करके इधर लगाते हैं, तो वो हो हाँ जाता है सर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है उसमें। राइट राइट, करेक्ट, प्राइस तो चेंज होते रहता है, बराबर। ठीक है। हाँ जी। सर इसको सेव कैसे करेंगे स्ट्रेटजी सर? ये तो ऑटोमेटिकली आप जब दो है इसमें, एक ऑप्शन ऑटो सेव होता है। अगर ये ऑटो सेव आपने एनेबल किया है तो आप जब रिसेट करके जब नया स्ट्रैटेजी बनाते हैं, पहली बार जब आप ट्रेड लेंगे, एंटर करेंगे लेग, तो ये नाम पूछेगा। तो हाँ आप हाँ। ऐसे कुछ नाम एंटर कर दीजिए ऐसे, और सेव कर दीजिए। तो फिर अब ये ऑटोमेटिक सेव होता होता रहेगा, ये ऑटो सेव। सिर्फ फर्स्ट लेग जब ऐड करेंगे तब वो ट्रेड का नेम वगैरह पूछेगा वो, और उसमें सेव कर देगा। और अच्छा, उसके तो बाद अब, सारी स्ट्रेटजी को कंप्लीट करके हम छोड़ दें तो वो ऑटो रन करने लगेगा? हाँ हाँ, बस वो सेव होते रहेगा, वो सेव होते रहेगा बस, वो ओके ऑटोमेटिकली ओके। सेव होते रहेगा। आप बाकी और लेग्स ऐड करते जाइए तो वो वैसे ही सेव रहेगा। अब ये जैसे मैं ये ऐड करता हूँ या और ये ऐड करता हूँ, अब ये ऑटोमेटिकली ये चार चार लेग सेव हो गए हैं अभी, ऑटोमेटिकली सेव हो अच्छा गए। अच्छा। अगर आप ये इनेबल नहीं रखेंगे तो फिर आपको जाके इसको सेव करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके सेव करना पड़ेगा मैन्युअली। और इसको कैसे हम रिक्वेस्ट करें सर आपको कि आप इनेबल कर दें हमको? ये सिर्फ आप मुझे एक मैसेज कर दीजिए टेलीग्राम में, मैं आपको लिंक दे टेलीग्राम दूंगा। जो आपका है आई चार्ट्स का? हाँ उसमें जाके मेरा जो डायरेक्ट मैसेज मुझे भेज दीजिए, डायरेक्ट भेज दीजिए मैसेज। डायरेक्ट श्रीकांत उसमें जी, तो इसमें पेपर चार ट्रेडिंग भी है कॉलम क्या? बने हुए हैं। सॉरी। इसमें पेपर ट्रेडिंग भी होगा क्या? हाँ जैसे ये हमारे पास एक पेपर ट्रेडिंग हो जाता ब्रोकर है ना। नहीं आप है ये अभी। जैसे अब ये मैंने एंटर किया है, आप इसको लाइव ट्रैक कर सकते हैं। अब ये तो पेपर ट्रेडिंग जैसा ही हो गया है। अच्छा अच्छा, नहीं हमारे पास अभी ब्रोकर नहीं है ना, अभी दो ही ब्रोकर है आपका जो बता रहा है उसमें, तो अभी हाँ नहीं, ब्रोकर तो कम है ये तो उसके कोई लिए। अभी ट्रेड एग्जीक्यूशन इसमें नहीं है, ये सब पेपर ट्रेड्स हैं ये पूरे। ओके ओके, लाइव मॉनिटरिंग के लिए आप यूज तो कर ये आप सकते हैं। सबको दे दीजिए ना, सबको दे दीजिए, आपको वो अभी चेक ऐड करके हो वो। जाएगा, इसमें एक दो तीन फीचर्स बाकी हैं अभी। हाँ तो वो ठीक है ठीक फीचर्स ऐड होते ही ये आ जाएगा इसमें, यहाँ पे ऐड हो जाएगा ये टूल्स में। ये पुराना पोर्टफोलियो ट्रैकर है उसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, ओके। बस नेक्स्ट फ्यू डेज में ऐड कर देंगे। कुछ कुछ इसमें कुछ फीचर्स बाकी हैं, टेस्टिंग बाकी है, वो करते ही कर देंगे। तब तक आपको यूज करने का है तो कर सकेंगे आप, मुझे जस्ट मैसेज कर दीजिए। और श्रीकांत सर जी। या, हेलो। यस, सर रवि पवार, मैं नासिक से बात कर रहा हूँ। या, सर एक्चुअली मैं लास्ट 2 मंथ से आपका इस जो
आई चार्ट को यूज कर रहा हूँ सर। सो टूल्स के बारे में ज्यादा तो जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैंने ऑप्शन की एक बेसिक एक मतलब अच्छी सी कोर्स की है। मैं भी ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ स्पेशली। ओके। सो सर मुझे कुछ चीजें हैं यहाँ पे, जैसे कि स्ट्रैडल का जो अपना चार्ट है, राइट? तो हम लोग स्ट्रैडल चार्ट पे जा करके किस तरह से हम लोग पोजीशन बना पाएंगे, मतलब स्ट्रैडल के वी वैप का जो स्ट्रैडल है अपना, उसके हिसाब से सर। जैसे कि हाँ, स्ट्रैडल चार्ट पे हम लोग जाते हैं, राइट? राइट, तो मैं वहां पे बताता हूँ हमें, जी जी, आपको स्ट्रैडल चार्ट्स। उसको वी वैप को हम लोग किस तरह से काउंटर कर सकते हैं, या फिर अच्छा, वीवैप से करना है आपको। हाँ जी। जैसे कि वन, देखिए अभी यहाँ पे हम स्ट्रैडल क्रिएट करने पे जो रहता है, हम एट द मनी का पी और सी जो है सिलेक्ट करते हैं सर, राइट हाँ, सर? राइट। स्ट्रैडल क्रिएट करने के समय। सो मतलब एज अ ऑप्शन बायर है तो सेलिंग की स्ट्रेटेजी, बट सर क्या कोई ऐसा हम लोग ट्रेड बना सकते हैं ऑप्शन बाइंग के लिए स्ट्रैडल के और वीआईपी के हेल्प से? फॉर एग्जांपल अभी एट द मनी का जो है मार्केट अभी चल रहा है यहाँ पे, जस्ट सर। हाँ, वो तो वैसे तो वीवैप के ऊपर जब जाएगा तब आप ले सकते हैं, या फिर मैंने आप ये भी बताया था कि केल्टनर के बेसिस पे भी आप, क्योंकि आपको अगर ऑप्शन बायर अगर हैं आप, तो आपको जी ब्रेकआउट चाहिए। जी ऑप्शन जी। में ब्रेकआउट अगर होगा तभी आप ओके उसको ले सर, ये सकते हैं। केल्टनर की सेटिंग्स हमें खुद से करनी होगी सर? 50 जो 53 जो है ये शिफ्ट 53 परसेंटेज में। एक्सपोनेंशियल जनरली मैं ओके सजेस्ट करता हूँ, 53 एक्सपोनेंशियल। तो अब ओके ये जो केल्टनर के ऊपर जब जाएगा, ऊपर जब क्लोज होगा, तो वो ब्रेकआउट ओके होता है। वो ब्रेकआउट होता है तो उसके बेसिस पे आप ले सकते हैं, और फिर एक बार वो नीचे आ जाए, ये रेड लाइन के नीचे या फिर और इसके भी नीचे, तो फिर वो ऑप्शन सेलिंग के लिए बेटर हो जाता है। तो जनरली ऑप्शन बायर्स यहाँ से यहाँ तक ही आप होल्ड करते हैं। होल्ड, हाँ, कर सकते हैं। तो वह वो सिग्नल ले सकते हैं, लेकिन जो भी सर जैसे कि इंडिकेटर आप यूज करेंगे, वीवैप यूज करेंगे उसके ऊपर बाय करने के लिए, और या फिर ये केल्टनर यूज करेंगे, तो इश्यू होता है इसमें ऐसे, आपको विपसॉज आते रहेंगे। तो ऑप्शन बाइंग में वो तो कॉमन है, तो कुछ नहीं कर सकेंगे आप। तो ऐसे ओके यहाँ ओके, पे एक अगर एक आप प्रॉपर, बाय, जी एक या प्रॉपर ऐसे लेके अगर समझे कि हमें जैसे कि अभी हाँ, हाँ, क्लेटनर के ऊपर ये निकल चुका है, राइट? सो यहाँ पे हम हाँ, कंसीडर करेंगे कि रेड लाइन जो बीच का है यहाँ का हम लोग एसएल प्रेस करके हाँ, कर आगे सकते उसे हैं। एसएल इसके ट्रेड कर थोड़ा सकते हैं नीचे सर। लगा लीजिए, इसके थोड़ा नीचे, हम्म। यहाँ हाँ बाय हाँ। करके यहाँ इसके नीचे सेल, तो ओके ओके है वो, क्योंकि आजकल वैसे भी मार्केट बहुत मूव हो रहा है, तो जनरली जी। ये चल जाएंगे ट्रेड्स। ओके तो वॉलेटिलिटी हमें, बनी हो तो फिर ये आप ट्रेड्स चलेंगे आप, तो सो बराबर एनवायरनमेंट है प्रेजेंट। ओके सो ये जो ब्लैक लाइन जो है ये क्लेटनर के ऊपर का जो अपर ब्लू लाइन जो है, जब हाँ, इसके ऊपर निकलता है तब हम बाइंग के लिए प्रेफर करेंगे, राइट सर? करेक्ट, करेक्ट, बराबर। ओके सो जैसे कि मैं एट द मनी प्रीमियम अब देख पा रहा हूँ, जैसे कि सॉरी स्ट्राइक प्राइस देख पा रहा हूँ 51700 का है सर, राइट सर? हाँ, सो उसी के लिए हम इन द मनी प्रेफर करेंगे 51600 सर, राइट सर, बाइंग के लिए? राइट, कर सकते हैं, करेक्ट। ओके, और जिस तरह से जैसे कि आपने बताया ऊपर से जब आ रहा है ये वीवैप, तो इस ब्लू लाइन को ब्रेक करेगा तो हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं उसे। इसके नीचे, हाँ, ये नीचे हाँ जी। लोअर, हाँ, लोअर लाइन के नीचे सेलिंग। सो सर हम ये जब इसे ये ब्रेकआउट करता है, फॉर एग्जांपल हम्म, ये अप या डाउन लाइन को, ब्लू लाइन को, हाँ, तो ये चार्ट पे जा करके हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का एक सिंडिकेट हमें चाहिए सर, राइट सर? स्ट्रॉन्ग कैंडल, मतलब ऑप्शंस में। नहीं, जो स्पॉट का प्राइस रहेगा, फॉर एग्जांपल हम देखिए एक ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देख रहे हैं, जैसे कि डाउन अप ट्रेंड शुरू हो गया, जैसे कि आपने बोला कि ब्रेकआउट है, एक समझिएगा स्विंग ब्रेक किया है, तब जाके इसने जो है ये क्लेटनर के चैनल को ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है। तो हम्म, यहाँ पे हमें एक एश्योरिटी चाहिए कि एक कोई कोई तभी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए अप या डाउन साइड में, कर तब सकते जाके हैं, हम पोजीशन वैसे बना भी कर सकते हैं। सकते हैं। अब वो अगर आपको ओके। वो देखना है तो एक मिनट, एक मिनट, वो भी देख हाँ लीजिए, हाँ। इसमें वो भी एक बार हाँ जी, देख लेते हैं। यस सर, ऑप्शन हम लोग अभी बैंक निफ्टी का विवरण देख रहे हैं ना सर? हाँ, जी। ये कॉल डाल दिया मैंने। सर ये हमारे फ्यूचर चार्ट पे भी अवेलेबल है ये क्लेटनर चैनल? हाँ, इस अवेलेबल है, उसमें भी अवेलेबल। ओके। यहाँ पे पुट डाल दिया मैंने, 1 मिनट। अब ये जो स्ट्रैडल था, 51700 का है सर ये। हाँ,
ये एज एग्जांपल लेंगे, ये टाइम पे, इस टाइम पे पता नहीं क्या था, वो तो आइडिया नहीं है, लेकिन 31 अक्टूबर 12:26। 12:25, हाँ जी। 12:25, हाँ तो 12:25 देखेंगे, अराउंड ये है, यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे रहेगा, तो आपका कॉल पुट बाइंग आएगा यहाँ पे ओके 12:26 पे। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, ये कॉल भी गिर रहा है और यहाँ पे ये भी गिर रहा है, तो आप स्ट्राइडल तो बाय कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअली पुट भी बाय कर सकते हैं, जो भी है। तो ये यहाँ ओके पे 12:25 पे सिग्नल ये कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर ये दोनों, इसका ये ब्रेकडाउन होना चाहिए कॉल साइड और पुट, या फिर ऑपोजिट जो भी है, कॉल ब्रेकआउट एंड पुट ब्रेकडाउन, या ऑपोजिट वाइस वर्सा। सर, टाइम फ्रेम would be 1 minute only, or we can change the time frame, sir. What you आप suggest आपकी to us? मर्जी, आपको ये बहुत फास्ट लगता है तो 2 मिनट्स या 3 मिनट्स भी जा सकते हैं। 5 मिनट्स बहुत लेट ओके हो जाएगा इंट्राडे के लिए, क्योंकि फिर वो, ओके हाँ वो ओके मूव कैच करने में बहुत, क्योंकि आजकल छोटे छोटे मूव्स भी बहुत होते हैं, तो इश्यू है कि 5-10 मिनट्स का, अगर 5-10 मिनट्स का रहेगा तो फिर यहाँ कवर हो जाएगा, 1-2 बार्स में ही कवर हो जाएगा, वो इश्यू है। ओके। सो और सर एक चीज ये थी कि जैसे कि मैं कॉन्ट ऐप भी यूज कर रहा था लास्ट 1 ईयर से, ठीक है। जी तो सर मैंने वहां पे एक देखा, कुछ ऑर्डर बुक जो है वो वहां पे हमें इनिशिएटिव दिखता है, जैसे कि बायर और सेलिंग का। तो क्या हमारे पास कुछ ऐसा वर्जन है सर जहाँ पे हम देख नहीं, वो पाएंगे या कुछ ट्रैक कर अलग पाएंगे? फीड आता है ऐसे सुना है मैंने, पता नहीं, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है, तो उसमें वो ओके ऑर्डर का डेटा आता है, तो हमारे पास तो ओके नहीं है वो, तो वो ओके रियल टाइम ओके। डेटा लेवल 2 वाला लगता है मेरे ख्याल से, पता नहीं। हाँ जी जी जी, रियल टाइम डेटा है वो, लेवल 2 में ही है, वो हाँ, सबसे तो ऊपर वो है वो। डेटा नहीं है हमारे पास, तो इस यहाँ तो, ओके हमारे यहाँ तो अवेलेबल नहीं होगा। ओके ओके, नॉट टू वरी सर। आपका जो ये जितने टूल्स है ये सब मतलब सीखना पड़ेंगे, लेकिन क्रिस्टल क्लियर है सर। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड वर्क सर। थैंक यू, ओके। और थैंक्स। मुझे एक इश्यू आ रही थी, वो आपने जब मैं यूज कर रहा था इसे, सो मैं कुछ देख नहीं पा रहा था, तो आपने क्विकली जो है टेलीग्राम पे मुझे हेल्प की। सो उसी के लिए मतलब आप बहुत एक्टिव हो, इनिशिएटिव लेते हो इस चीज को लेकर के, और थैंक यू, हमारे थैंक यू। छोटे छोटे ट्रेडर को वो सहायता आपने, और कम बजट में अच्छा प्लेटफॉर्म आपने लाया है। तो सर हम मतलब ईयरली जाना चाहूंगा मैं अपकमिंग डेज में इसके लिए। लेकिन थैंक्स। उससे पहले सर कैसा है सर कि मुझे टूल्स के लिए कुछ हेल्प मिली तो सही रहेगा सर, जैसे कि लर्निंग इस टूल को, हाउ टू लर्न दिस ऑल टूल्स सर, देन आई कैन मूव फॉरवर्ड। श्योर श्योर, ओके। ओके। सो टूल्स के लिए मुझे मतलब क्या आपका कोई वेबिनार अरेंज होने वाला है, या फिर कहाँ से मैं वीडियो ट्रैक कर सकता हूँ सर? ईच एंड एवरी टूल के लिए चाहिए क्या आपको? हाँ जी, ये अभी मतलब होम में जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है, मैं हाँ हाँ। वो हम्म, वीडियोस बनाने में से मैं मुझे टाइम मिल नहीं रहा है, ओके। तो मुझे बैठ के करना ही होगा, वो ईच टूल के लिए एक अलग सा वीडियो, तो वो करके तो, ईच। और किसी ने हाँ हाँ प्लेलिस्ट का भी सजेशन दिया था, तो हमारा, हम सर हाँ एक हाँ अच्छा से वीडियो बनाइए सर, हिंदी में भी थोड़ा हाँ समझ में ईच, आए अच्छे से। या ईच ओके। एक टूल का एक 10-15 मिनट वाला वीडियो बना के हम लोग यहाँ पे टूल पे ही लिंक दे देंगे उसको, तो वो बेटर रहेगा, वो जी करेंगे सर, सर। उससे कैसा रहेगा कि एक वीडियो का आप ऑप्शन अगर दे देते हैं, तो जो मतलब नए सब्सक्राइबर है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे अभी फिलहाल ये पता नहीं है सिंबल डैशबोर्ड क्या है, स्क्रिप एंड अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या है, पार्टिसिपेंट्स ओआई डैशबोर्ड क्या है। सो ये सारी चीजें सर मैं वहां से अगर मैं देखता हूँ तो हेल्प हो जाएगी सर। श्योर, ऐसा। एक टॉप प्रायोरिटी की बेसिस पे कर देता हूँ मैं, ये स्टार्ट जी कर सर। देता हूँ इसको, वन बाय जी वन सर, बहुत टूल्स ग्रेट रहेगा ऐड सर। कर देता हूँ। जी श्योर। जी। और सर एक गुड थिंग ये है कि मैं एक स्टॉक स्क्रीनिंग भी करता हूँ भाव कॉपी से लेकर के। सो ओके, कैन वी गेट द भाव कॉपी फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म? नहीं वो हमारे पास तो नहीं है अवेलेबल, हमको ओके डेटा फीड के थ्रू आता है डेटा, तो भाव कॉपी ओके। भी डेटा फीड के थ्रू आता है, लेकिन हम लोग सेव हाँ नहीं, हाँ। डायरेक्टली हमारे डेटाबेस में ही जाता है, तो वी कांट प्रोवाइड इट बेसिकली, वैसा है। ओके ओके, नॉट टू वरी अबाउट सर। सर ये जो अपना वो ऑप्शन चेंज है, ये सर लाइव है, लाइक मतलब इसमें ये 3 मिनट पे रिफ्रेश होता है सर, या फिर डायरेक्टली ये एवरी जैसे वन 1 मिनट डिलेड होता है, और हमको एक्स्ट्रा 30 सेकेंड्स लगते हैं, तो 1 मिनट 30 सेकेंड्स रहेगा। इसमें अगर आप ब्रोकर के थ्रू लॉग इन होंगे, अगर आप स्टॉक्स हो या ट्रेड जीनी हो, तो फिर वो लाइव रहेगा, रियल टाइम रहेगा। ओके। Yes. सर अभी मेरा अपस्टॉक में अकाउंट था, लेकिन वो टेम्पररी है सर, तो इनएक्टिव है। तो वो जो आपका जो दूसरा ब्रोकर है, क्या नाम लिया आपने? ट्रेड जीनी, जी नहीं, सो उसके कुछ चार्जेस है सर ईयरली अकाउंट ओपनिंग नहीं के? वो एक हम लोग एक लिंक देने वाले हैं साइट पे, वो इंस्टेंट अच्छा एक्टिवेशन का विदाउट, और उसका एनुअल फी भी कुछ भी नहीं है, सो
आप इमीडिएट उसको रजिस्टर करके एक्टिवेट करा सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस, कोई एनुअल चार्जेस भी नहीं रहेंगे। तो वो सो सर जी वो कर लिंक हम दीजिएगा लोग हमारे प्रोवाइड लिए। करेंगे जल्द ही। ओके ओके, तो दैट विल बी रियली ग्रेट फॉर अस सर, या दैट प्लीज विल बी, डू इट फास्ट। या या कर देंगे उसको, वो भी हाँ जी, रेडी हाँ जी। हो रहा है उसका। ओके। श्रीकांत और सर, सर, और या सर अभी आपने जो सिर्फ ओवाई बिल्डअप का अभी जो टैब लिया था ना आपने, मैं हाँ थोड़ा सा डिले हो गया था ट्रैफिक में रहने की वजह से, तो मेरा वो पार्ट जो है सर मिस आउट हो चुका है। क्या आप हाँ, एक वो बार वो आज ओवाई अपलोड हो बिल्डअप का जाएगा। बता अब पाएंगे? यहाँ हेल्प वीडियोस में अगर जाएंगे शाम में, तो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा पूरा रिकॉर्डिंग। आज का रिकॉर्डिंग पूरा हो जाएगा सर? हाँ, अवेलेबल रहेगा। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। ये प्रीवियस रिकॉर्डिंग भी है सर इसमें कुछ इस वीडियोज में? प्रीवियस, हाँ, अब यहाँ जाके देख लीजिए, पूरे सब के सब वेबिनार्स पूरे अवेलेबल हैं, रिकॉर्डिंग्स वाह, अवेलेबल दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट, हैं। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, दैट्स इट सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू। यस, एनीबडी हैड एनी मोर क्वेश्चन? वन श्रीकांत सर, हाँ ये सर। ऑप्शन का प्राइस चार्ट पर कितनी देर बाद आता है? 1 मिनट 30 सेकेंड्स होता है सर, डेफिनेटली उतना मतलब तो लगता है। ना ट्रेड करेंगे तो 1 मिनट 30 सेकंड का डिले आएगा ही आएगा। हाँ, आएगा। मतलब जीरोधा में तो इंस्टेंट आ जाता है, यहाँ पे हमको हाँ, डिले वो लग तो जाएगा। रियल टाइम होता है ना डेटा। अब यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट चार्ट ऐड होने वाला है, ऑलमोस्ट वो रेडी है। तो वो आपको पूरा रियल टाइम रहेगा फिर। स्ट्रैडल का भी, और स्ट्रैडल का ट्रेडिंग व्यू भी आने वाला है। ये तो नहीं है। तो स्ट्रैडल का भी और ऑप्शन फ्यूचर्स का भी तो बीच में ट्रेडिंग व्यू था, का चार्ट हमने ऐड हटा होना दिया है, क्या वो? नेक्स्ट वीक ऐसे हो जाए। बीच में तो आ रहा था ना सर, इसमें बीच में तो आपने दिया था ना ट्रेडिंग व्यू का कुछ ना कुछ। नहीं, वो तो यहाँ पे है ना, वो तो 1 मिनट डिलेड वाला है। वो अभी अभी ये अच्छा, जो दिखाया ना, ये वाला। हाँ, लेटेस्ट वाला अभी नहीं है इसके पास। हाँ, एक्चुअली क्या ये होता है, अगर इसी में होता है तो क्या हमको जीरोधा लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं तो पूछ रहा था आपसे। करेक्ट, राइट राइट, ये हाँ, ऐड हो जीरोधा जाएगा केवल लाइव चार्ट टूल्स के में। लिए ही यूज करते हैं, बाकी किसी के लिए यूज नहीं करते, इसीलिए सर पूछ रहे थे। ओके, श्योर। और सर वो आपने डे वाइज ओआई वाला बताया तो उसमें तो केवल निफ्टी आ रहा है, बाकी स्टॉक्स कैसे आएंगे कौन सा? फ्यूचर्स में? सर सर ये म्यूट कर पीछे से दीजिए एक नॉइस आ रहा है सर, क्या कौन है? इनको बहुत आप ना, एक अनम्यूट मिनट, कर मैं पाओगे देखता प्लीज? हूँ। मेरा नहीं है। हेलो फ्यूचर्स सर में जी। जाइए सर, फ्यूचर्स में। एक मिनट, हाँ, मैं बाकी सबको म्यूट कर दिया है हमने। हाँ, फ्यूचर्स में कौन सा बताया आपने? शायद मैंने म्यूट कर दिया हूँ। हेलो सर, आप जो भी मुझे पूछ रहे थे हाँ क्वेश्चन। सर, उसमें हाँ फ्यूचर्स में जाइए, फ्यूचर्स में। हाँ, एक मिनट, फ्यूचर्स में कहाँ पे? जब जो डे वाइज वाला बता रहे थे, जिसमें अच्छा मुझे अच्छा, सभी हाँ, स्टॉक्स वाला चाहिए। एक मिनट, डे वाइज यहाँ पे है। जो प्राइस अप ट्रेंड के साथ आ रहा था वो तो था ही, वो तो देख ही लेते हैं, पर जैसे डे वाइज चाहिए हाँ तो इसमें सभी स्टॉक्स कैसे आएंगे? अच्छा, यहाँ पर ऑल सिंबल्स करना पड़ेगा हाँ, जैसे। ये ऑल सिंबल सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। 10 मिनट सर, मैं एक बार चेक ये कर लेता ये हूँ। जो है हमारे हमारे है, हम हमारे लिस्ट है ये। अगर आपने कुछ क्रिएट किए हैं तो यहाँ पे आएंगे। तो ये ऑल सिंबल्स अगर सेलेक्ट करेंगे तो पूरा आएगा इसमें, सब ठीक सिंबल्स। है सर, ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, या एनी हाँ सर। एनी क्वेश्चंस? हाँ सर। हाँ या सर, सर आपने जो अभी जो मल्टी स्ट्राइक वाइज चेंज जो दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, हाँ, तो वो इसका डाटा तो मतलब अब कितना वो भी लेट से अपडेट होता है क्या, या फिर लाइव रहता है अभी? तो सब 1 मिनट डिलेड होता है यहाँ पे, 1 मिनट 30 सेकेंड्स डिले सब में होता है। हमारा डेटा ही डिलेड है, तो डिले ही रहेगा। और जो ऑप्शन चेन का जो डेटा रहेगा वो भी डिले रहेगा? हाँ हाँ, ये सब पूरा सब साइट का डेटा, एक्सेप्ट ये वाले टूल्स जो होते हैं ब्रोकर लॉगिन के, ये रियल टाइम होते हैं। बाकी सब रेगुलर टूल्स जो है वो सब सारे डिलेड हैं। तो जैसे कि मेरा धन का ब्रोकर है, तो उसको ऐड कर सकते हैं क्या यहाँ पर अभी? अभी एट प्रेजेंट अभी अवेलेबल किया नहीं है। अभी हमको ऐड करना है वो। अभी एट प्रेजेंट तो सिर्फ ये 2 ही ब्रोकर्स हैं। तो अच्छा वो अच्छा। ऐड करेंगे हम लोग, बाकी के भी ऐड करेंगे जितने हाँ हो सर, सकते हैं। उसको जल्दी करा दीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। वो तो लाइव ठीक है, डाटा नहीं मिलेगा तो फिर समस्या हो नहीं जाएगी ट्रेड करने में। करेंगे, लेकिन वो भी ये सारे टूल्स नहीं मिलेंगे आपको रियल टाइम डेटा पे। यहाँ पे हम लोग जो ऐड करेंगे वही हाँ रहेंगे हाँ, रियल। बस वो ऑप्शन चेन नहीं चाहिए आप डेटा, आप तो ज्यादा हाँ, जरूरी नहीं है। ठीक है, हम इतना ही मिले तो करेंगे अभी। काफी है। ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करेंगे। काम चल रहा है, बहुत सारे ब्रोकर्स पे चल रहा है काम, तो कर देंगे इसको।
ठीक है सर, थैंक यू। Okay. Hi, sir. Yeah. Tell me. So, just before this, there was one gentleman who said a strategy regarding that multi-strike. Yeah. So, Yes. just a suggestion. Like, can we have one session where all the users of this platform can share their experience, strategy, where even I can also share, kind of, how they are using this platform, how they are looking at this platform, and Yeah, how yeah, they're sure. I mean, if whoever is ready, if you can contact me, I can set up one webinar. Yeah, I'll be very happy to set it up. So you can all share whatever you want. So, This is a great idea, sir. yeah, great idea. We can It's a do great it. idea. Whoever is interested to share, please send me a message on Telegram, and श्रीकांत we'll जी, set it मैं up भी on यही a बोलने वाला था, मैं weekend. यही सोच रहा था बोलूं करके, इन्होंने बोल दिया भाई साहब ने। मैं भी यही बोला, जिसको जो स्ट्रेटजी आती है वो शेयर करें, तो एक हाँ, अच्छा हो जाएगा प्लेटफॉर्म, बॉलीवुड में मजा आएगा। श्योर जरूर जरूर। तो Awesome. मुझे Thank you, sir. मैसेज कीजिए, मैं वो फिर वो एक सेटअप कर दूंगा, और फिर आप जो चाहे आप शेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। Thank you, sir. Thank you. ओके। या इवन सर, हम आपका टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें भी अगर लोग सीनियर लोग चाहें तो उसमें भी भेज सकते हैं सर। क्या, सॉरी समझा नहीं क्या आपका जो टेलीग्राम चैनल है आई चार्ट्स का, हाँ उसमें भी स्ट्रेटजी में लोग भेज सकते हैं अपने हाँ, सजेशन। शेयर कर सकते हैं ना आपको, अगर उसमें आप शेयर कर दीजिए, उसमें आप चार्ट्स स्ट्रैटेजी। को भेज दीजिए, अपनी स्ट्रेटजी भेज दीजिए कि हम लोग जो न्यू कमर्स हैं वो बेनिफिट करें उसके लिए। श्योर। मैं थोड़े क्वेश्चंस लूंगा यहाँ पे, चैट में मुझे भेजा है लोगों ने। हाउ टू यूज स्ट्रैटेजी बिल्डर, ये वो, अच्छा वो तो मैंने बताया है। म्यूट वन सेकेंड। प्रीमियम डीके कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन बायर्स। हाँ, कोई पूछ रहा था कि ऑप्शन बायर्स कैन यूज प्रीमियम डीके, करेक्ट है, यूज कर सकते हैं। व्हाट कंफर्मेशन कैन बी यूज फॉर इंट्राडे ऑप्शन बायर्स? ऑप्शन बायर्स के लिए प्रीमियम डीके जो है, ऑप्शन बाइंग के लिए कोई पूछ रहा था, तो उसमें see what you'll have to do is you can use premium decay to identify the direction of the market. And so if, for example, if price is going up and premium decay is showing you that the call price is above zero, so you can whatever strikes you have selected 3 or 5 strikes, so you can select those any of those strikes and probably go buy that option in that direction. So I mean, what other signal is, basically you just need to look at the option chart itself. But whatever strikes you have selected, if they are showing you the line is above zero and it is rising, then it means that the prices are going up. You can just go and buy that option, basically. But as long as you have a good stop loss in place in your mind. So intraday IV chart is available in. See, if you want for option itself, options you can use, you can go to 1 minute. The trading view tool here. For this strike, you can add IV. You can search for IV here and you can add IV. Now this IV, if you want, let me 1 minute. You can drag it to this. So you can view this price versus IV chart. You can select this. You can use this chart for intraday IV chart for a particular strike. If you want for the ATM IV itself, you want to track, then you go to multi-strike tool. In multi-strike tool, this IV, yellow line that you see is the ATM IV, at the money strike IV. So this also you can track. If you don't want it for a particular strike, you just want to watch the Nifty's ATM strike, you can do that. For a particular strike, you'll have to add it to the option chart. So you can do that. Or you also have over here in option snapshot, show hide IV. If you click this purple line in all these charts is IV. This also you can track. So it's up to you how you want to track it. Based on that, you can use the tool. Let me see others. What else?
OI data is delayed. Yeah, OI data is delayed. All data is delayed on our website. We use NSE's official 1 minute data feed, which is 1 minute delayed data feed. And then we have a processing overhead of around 30 seconds for our data processing and computations and all that. So 1 minute, 30 seconds is the delay. If you want real time, you'll have to use the live tools. One person is asking how to use combined use of premium decay and OI stat. No, premium decay and OI stat is basically not to be used in combined. I mean, it is for kind of confirmation. See, OI stats is for identifying the trend sentiment or the direction of the trend sentiment of the market. So that will give you based on OI whatever trend it is indicating. Now, whereas premium decay will tell you about price. So it is price change, basically options, call and put price change. So that will tell you price wise which the direction is. If your OI stats analysis, OI based analysis is matching with the analysis of price in premium decay, then both are matching. So there is a very good chance that the market is going to go on that side. Generally, most of the time, they both will indicate similarly, or sometimes they'll be indicating in an opposite way, because at market turns, what is going to happen is they are going to diverge. Price is going to tell you that it is still going up, and maybe why positioning has started, unwinding has started. People are booking profit and all that as the price is going up. So at that point, you'll see that the OI will start a little bit, I mean, it'll go steady. It will not keep showing you that it is going up. So when the increase will stop and then small unwinding will start, it will tell you that probably the trend has matured. So that way you can keep both open, and but you both are a different type of analysis. Options, open interest is a sentiment kind of analysis where the traders are positioned, where they have positioned themselves, which strikes, on which strikes there's a lot of open interest that has got built up. And so that you can, all that is used to indicate trend sentiment. Premium decay is price based. So both have to be used that way. It is not combined, but side by side together. That is how you have to use it. One person is telling me in chat that he can share some idea, but not on recording. Best thing is for you, I don't know how to do that then, because recording is required. I can't stop it. You can probably share it in the strategy group, the strategy group of the Telegram channels, Telegram group. So over there you can share. I think that will be better. One person is asking about option Greeks data. Can we have Greeks data? So we don't have API as such, so we can't give you Greeks data. That is the issue. So you can download it from option chain, but it is just a snapshot. That's it. That way the questions in the chat. Okay. Any other questions? Any other tool you want me to discuss, or we can stop here? So, which is that group created for strategy? If you go to the Telegram group, left side you will see options. One is general, the other is markets, then strategies, and other is free feature requests. So you'll see 4. So if you click that on the left. So this is not in that announcements, right? No, not announcements. It is the main support. If you see on the web, I don't know if are you already in the Telegram group or no? I'm only in the announcement group. I don't know how to identify the other groups. Okay. How to search for it? Or is there a link you can share here? I can just click and join. It is that this link on the top right corner of the website, help. Okay. So okay. Yeah, if you click that, it will go there. Okay, got it. Yeah. Okay, so I guess we can stop here then. If I have
clarified anything? Any other questions are there? सर थोड़ा वो ऑप्शन चेन का जो है उसको थोड़ा दिखा दीजिए ना, दो वर्जन है, एक बीटा वाला है हाँ और एक ठीक है ठीक है दिखा देता हूँ. ऑप्शन चेन, let me look. Option chain beta is one over here. Yeah. हाँ, इसमें क्या चाहिए आपको? ये इसमें आप जो भी है आपके कॉलम्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने स्ट्राइक्स आपको देखने हैं वो ये सेलेक्ट कर सकते हैं. इसमें से यहाँ पे लॉट्स ऑफ क्वांटिटी में से एक सेलेक्ट कीजिए. नॉर्मल होता है, वैल्यू बहुत अलग होता है, ये थोड़ा इसको अवॉइड कीजिए. आपको इसके बारे में पूरा आइडिया मिले तो फिर देखिए. लॉट्स या क्वांटिटी देख लीजिए तो सिंपल रहेगा. और तो सर ये जो इसमें जो वॉल्यूम जो इंटरडे में जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो उसको भी अपडेट मतलब लाइव अपडेट नहीं मिलेगा ना उसका? लाइव मतलब वही ना, 1 मिनट डिलेड रहेगा हमारा. 1 मिनट वन 30. मिनट, अच्छा अच्छा, हाँ 1 मिनट 30 उसका डिले सेकेंड्स हो गई. हाँ, वो लाइव टूल्स में ही रहेगा वो लाइव वाला अपडेट. और ये आपको नीचे यहाँ पे समरी मिल जाएगा सब पूरा. टोटल हाँ वो ओआई तो कॉल समझ में कितना है, गए. पुट में कितना है, और इसका हाँ, डिफरेंस मैं- कितना है, और यहाँ पे ओआई चेंज कॉल्स का कितना और है, टोटल पुट का. पीसीआर देखना है तो कहाँ देखने को मिलेगा? सॉरी, किसमें? टोटल पीसीआर. टोटल पीसीआर. हाँ. तो ये रहेगा, ये पीसीआर ओआई जो है अच्छा अच्छा. ये एक्चुअल पीसीआर है, लेकिन ये सिर्फ सेलेक्टेड स्ट्राइक्स का है. ये जो आप हाँ 5 जो यहाँ स्ट्राइक्स, 5 स्ट्राइक है उसका हाँ पूरे सब तो स्ट्राइक्स मिला ऑन के कर देखना है देंगे तो तो ऑन करना पड़ेगा. ऑल करना पड़ेगा. तो फिर ये पूरा का पूरा पीसीआर दिखाएगा. अच्छा. हम्म. तो ये है. और फिर आपको ये मिनट बाय मिनट भी रहेगा इसमें. मिनट बाय मिनट मतलब आपको बाय डिफॉल्ट आपको जो भी है आपको जैसे मार्केट चल रहा है तो वो दिखेगा. लास्ट मिनट का दिखेगा आपको. अगर इंट्राडे सेलेक्ट करेंगे तो पूरे दिन का आप देख सकेंगे. दिन के स्टार्ट में जाके 9:16 का जो डेटा हो, फिर 1-1 मिनट या 3 या 5-15 मिनट जो भी है, आगे जाके आप देख सकेंगे कि डेटा कैसे चेंज हो रहा है. तो ये आप दिन में भी देख सकेंगे. अब फिर आपको इंट्राडे में अगर आप ये देख रहे हैं, आपको लास्ट लेटेस्ट जाना है तो एंड क्लिक कर दीजिए तो लेटेस्ट में जाएगा वो. अब जो भी टाइम चल रहा है वो लास्ट लेटेस्ट टाइम का यहाँ पे दिखाएगा. डायरेक्ट टाइम पे भी आप जा सकते हैं, वैसे जंप कर सकते हैं कोई भी आपको जो टाइम जाना है, या फिर ये बटन यूज करके आगे हिस्टोरिकल पीछे भी कर सकते हैं. मूव कर सकते हैं. तो ये दो है ऑप्शन चेंज. हाँ सर, इसको बस जो ब्रोकर के साथ लिंक करवा दीजिए एक बार, फिर मजा आ जाएगा. हाँ कर देंगे सर, बाकी और ब्रोकर्स भी ऐड कर देंगे इसमें, हो जाएगा. ओके, एनी ये अदर? बहुत इम्पोर्टेंट चीज है. अगर ये अपडेट नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फंस जाएंगे फिर. हाँ ठीक है. आपको रियल टाइम ही चाहिए. ठीक है. ठीक है. Okay, any other questions? Let me stop recording once over here. I'll